Good morning. So let's continue where we left yesterday. Yesterday we did see the part of concave mirrors and हम लोगों ने yesterday we had discussed about the positions of concave mirror. So where am I going to place the object and where exactly is the image going to be? Now what are we going to do today? Today we are going to study about the image formation due to convex mirrors. But don't worry, ये उतना confusing नहीं है because convex mirror is much more simple because सब कुछ उसमें virtually बनता है and plus दो ही conditions होते हैं. Along with that, then we are going to study about the mirror formula, once again the sign conventions, and then we are going to end it up. So tomorrow would be the last lecture on to this topic, and tomorrow light reflection and refraction would get completed. Post than this, we are going to also take a lecture on human eye, and I think that would be all together for your half yearly. So literally in 1 month or 1.5 months, I think we should be done with the half yearly part. Now, so let's start. So images formed by convex mirror. As I told you yesterday that convex mirror is used in automobiles to see, the images or the trucks or the lights or the people who are actually coming behind or from behind you, and that is used to capture, or that is used to capture the images, and which is used as a rear view mirror. Now the word is that why are we using rear view mirror as a convex mirror, or why are we using convex mirror as a rear view mirror? Because convex mirror is a diverging mirror. Now when I am talking about that convex mirror is a diverging mirror, that simply means that convex mirror can diverge the light, right? So convex mirror चारों तरफ के अंदर से light को capture भी करता है and चारों तरफ में light को भेज भी देता है. And that's the reason why one of the use is the rear view mirror, and while the another use can be of street lights, because street lights को आपको काफी दूर तक spread करना होता है. That's the reason why you will use convex mirrors. Now let's start with the positions. First, at infinity, we all know yesterday according to the SI sign conventions we always have to use the object onto the left hand side. So again ये मैंने convex mirror पहले से बना के रखा हुआ है because आप जानते हो मेरी drawing है, उसके बाद में भी सोचो सीधा नहीं बना है. खैर, so this is that particular line which is the principal axis which is passing through P, and this is now also going to pass through. गाइस पहले कौन सा पॉइंट बनता है? F बनता है कि C बनता है? Of course F ही बनेगा. खैर, so यहाँ पर मैंने बना दिया से F, and then I have made the point C. And we also know that there is going to be a relation which is known as F is equals to R by 2. Now, okay. So let's now talk about the word at infinity. यदि मान लो object infinity पर है, infinity पे light rays हमेशा कैसे आएंगे? Parallel. Parallel to what? Parallel to the principal axis. Principal axis. जब ये आएंगे कॉमन सेंस से ये इसे रिफ्लेक्ट करेगा, बट सिंस दिस ग्लास इज बल्ज्ड आउटवर्ड्स तो ये ऐसे तो नहीं आएगा फॉर श्योर. It will get reflected somewhere like this. So this would be going right over here, and this would be going right over here. Right. But unfortunately eyes को उतना समझ में नहीं आता. तो eyes को apparently लगता है कि वो टकरा करके तो नहीं जा रही है, but eyes को क्या लगेगा कि ये इसी को बैक ट्रेस कर देना, and this is the focus which is behind the mirror. तो आपको लगेगा कि आपकी जो सो कॉल्ड इमेज बन रही है वो पीछे की तरफ बन रही है, ऐसा आपको लगेगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है. सो दिस इज नोन एज वर्चुअल इमेज बिकॉज ये रियल नहीं होती है, ये वर्चुअल होती है. सो दिस इज वर्चुअल इमेज विच विल बी मेड एट फोकस, बट एट विच फोकस? बिहाइंड द मिरर. नाउ यहाँ पर ट्रिक, एंड वेरी फ्यू स्टूडेंट्स कैन एक्चुअली से वर्चुअल इमेज के अंदर या इस तरह के कॉन्वेक्स मिरर के अंदर, सपोज करो किसी ने आपको बोला कि बताओ अच्छा F की वैल्यू कितनी होगी, फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव या नेगेटिव? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई रियली वांट टू सी, बिकॉज आई थिंक दैट इवन यू गाइज कैन नॉट आंसर दिस क्वेश्चन. फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ? वुड इट बी पॉजिटिव और नेगेटिव? एंड फॉर कॉन्केव मिरर what do you think would be the sign used for focal length? Would it be positive or negative? That's all you need to comment. For convex क्या होगा and for concave क्या होगा? And guys, requesting you, if you are seeing the answers on Google or on from any other site and then answering, though it is okay, but it's not helping your
So try and see the video and then answer. Anyway, so focus is behind the mirror. So it is behind the mirror. It is highly diminished. As usual, यदि आपको याद होगा कॉन्केव के अंदर भी यही था, highly diminished and point size. So इसके अंदर भी highly diminished and point size. So that's done. Now it's virtual and erect. वहाँ पर कैसा बन रहा था? It was real because it was being made onto the left hand side and it was erect. यहाँ पर भी it was virtual and it is erect. So erect वाला part match कर रहा है but virtual match नहीं कर रहा. So convex mirror में the images are being made onto the right hand side while concave के अंदर it is doing the left hand side. Let's start now. Suppose कर लो any other condition. अब ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा, सेंटर कर्वेचर पे रखा, फोकस पे रखा, पोल पे रखा, इन बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल कहीं पर भी रख दोगे, बिटवीन पोल P एंड फोकस F, इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन पोल P एंड फोकस F. पोल P और फोकस F के बीच में कहीं ना कहीं पर इमेज बनेगी, बट प्लीज अंडरस्टैंड नॉट ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड, अगेन ऑन टू द right hand side. So once again, please see your NCERT books for exactly the correct diagram. Between pole P, यदि आपने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, यहाँ रखा, इमेज कहाँ बनेगी? इसके पोल और फोकस के बीच में, बट कहाँ पर? राइट हैंड साइड. तो वो वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव की पॉजिटिव? कॉमन सेंस. Why should I tell you? Anyway, now and behind the mirror. So it is diminished. वो diminished image बनेगी, but it is virtual and erect. So a very important point between, the difference between the concave and a convex mirror. While concave mirror के अंदर सारी की सारी images magnified बन रही थी, real बन रही थी, convex mirror के अंदर सारी की सारी images क्या बन रही थी आपके पास में? Erect and virtual. Okay, and onto the right hand side. So remember this clarification, very very important. How can you see a mirror and tell without touching whether it's a concave or a convex? If you are going to stand in front of a concave mirror, common sense, you are going to see a magnified image of yours. That means it is a concave mirror. And if you are going to see a point size, a very smaller one image of yours, which is used to capture a lot of light, then it will be known as convex mirror. Perfect. So this is the topic of convex mirror. Convex mirror में केवल दो ही cases होते हैं, दो ही diagrams हैं उसके अंदर. So please do see the NCERT textbook, guys, for the correct diagrams. Now, let's talk about a very very important formula, and the same formula is in class 12, so do remember this formula. Now, mirror formula होता है 1 upon V plus 1 upon U equals to 1 upon F. So what is mirror formula? It is 1 upon F should be equals to 1 upon U plus 1 upon V. अब इसको पहले लिखो या उसको, फर्क नहीं पड़ता. What is F? F is known as focal length. F is focal length. What is U? U is known as the object distance. Object distance from where? From the pole. What is V? V is known as image distance. Image distance from where? From the pole again. That's so simple. But do remember to use the sign conventions. What is the sign convention? Simple number line ध्यान रखना. Number line के left में क्या होता है? Negative. Right में क्या होगा? Positive. ऊपर क्या होगा? Positive. नीचे क्या होगा? Negative. That's all. Sign convention उतना ही है बस. Now, next वाले topic पर आते हैं. But then before moving on to the next topic, why have you written this 2 upon R? आपको यदि याद होगा F should be equals to R by 2. याद है कल एक फॉर्मूला बताया था, फोकल लेंथ should be equals to the half of the radius of curvature. तो मैंने F की जगह पर R by 2 रख दिया, तो it should be equals to R by 2. ऊपर चला जाएगा तो to become like this. So you don't need to use this formula unless they have given you radius of curvature. Use this formula. Now ध्यान रखना, this is the mirror formula. अभी क्वेश्चन कैसे आएगा? उन्होंने आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देके रखा होगा, फोकल लेंथ देके रखा होगा मिरर का, और इमेज का डिस्टेंस पूछा होगा. F दिया है, U दिया है, साइन कन्वेंशन यूज करो, वैल्यू पुट करो एंड V निकालो. या उन्होंने ये भी बोल सकते हैं कि आपको उन्होंने V देके रखा होगा, इमेज यहाँ बन रही है, फोकल लेंथ इतना है, बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखूँ? ऑब्जेक्ट बता देना कहाँ पर रखना है. इट्स दैट सिंपल. बस साइन कन्वेंशन याद से यूज करना. एनीथिंग टू द लेफ्ट हैंड साइड of the pole negative, right hand side of the pole positive.
upwards of pole positive, below pole negative, that is all, that's all. Okay, now तो आज का क्वेश्चन ध्यान रखना, जब मैंने आपसे पूछा था कि कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ क्या लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, और कॉन्केव में क्या लूंगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। नेक्स्ट पे आते हैं द वर्ड मैग्निफिकेशन। अब आप लोगों ने दो चीजें देखी होंगी, वन देखी होंगी या सुनी होंगी, वन इज नोन एज माइक्रोस्कोप and another is known as telescope. माइक्रोस्कोप के अंदर भी हम स्मॉल चीजों को मैग्नीफाई करते हैं, एंड टेलीस्कोप में भी हम स्मॉल चीजों को क्या करेंगे, मैग्नीफाई। ओके, सो वंस अगेन टेलिंग यू, in microscope once again we are going to magnify the small things into the larger things, and telescope once again we are going to magnify the or by the way bring closer the objects which are very very farther away. तो जब भी कभी आप मून के डिस्टेंस को लोगे, स्टार्स के डिस्टेंस को लोगे, तो दे आर ऑलवेज एट इंफिनिटी। तो कहां पर उनकी चीजें बनेंगी, पॉइंट कहां बनेगा, फोकस पर, ध्यान रखना। नाउ so microscope and telescope both are used to magnify things in a way, okay, while telescope is used to by the way bring the objects closer to you, but still आप magnify ही कर रहे हो in the same way। तो ध्यान रखना कि आमतौर पे हम we don't use mirrors for the part of what, for the part of microscope and telescope, but if we need to use, दो हम लोग refracting type telescope के अंदर हम लोग यूज करते हैं मिरर्स को, ओके, या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में भी यूज करते हैं, बट अभी सिंस वो आपके सिलेबस में नहीं है तो आई वोंट कंफ्यूज यू, बट एज ऑफ नाउ के लिए इतना ध्यान रखना दैट कॉनकेव मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ओके, बस इतना ध्यान रखना। नाउ मैग्निफिकेशन, सो व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैग्निफिकेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड मैग्निफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड टू मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट। नाउ जब भी कभी आप बात करते हो पावर की, आमतौर पे पावर लेंस के लिए यूज करते हैं, बट मैं आपको जनरली फॉर्मूला बता रहा हूं। सपोज किसी ने आपसे पूछा डिफाइन द वर्ड पावर ऑफ लेंस, व्हाट इज लेंस, ऐसे ही मिरर्स की तरह ये ऑब्जेक्ट होते हैं बट ट्रांसपेरेंट होते हैं, और वहां पर रिफ्लेक्शन नहीं होता, रिफ्रैक्शन होता है। पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f। तो इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू पावर, बट मिरर फॉर्मूले में पावर नॉर्मली यूज नहीं करते हैं, सो वी विल नॉट राइट इट, बट वो लेंस में यूज करते हैं, जस्ट केवल बताने के लिए। एंड पावर की जो यूनिट होती है दैट इज नोन एज डायोप्ट्रे, ओके, या डायोप्ट्रे अभी बोलते हैं। सो आमतौर पे जब भी यदि आपको स्पेक्स लगे हो या चश्मे लगे हो या ग्लासेस लगे हो, तो आप देखोगे जब भी कभी आप ऑप्टिशियन के पास में जाते हो टू चेक व्हाट इज योर पावर, वो जो भी पावर लिखेगा वहां प्लस माइनस लिखेगा एंड वो डी लिख देता है। व्हाट इज डी, डी इज द यूनिट डायोप्ट्रे। ओके, नाउ so what is the mirror formula, 1/f equals to 1/u plus 1/v। magnification, now what is magnification, magnification is the ratio of the image to the object। जो भी इमेज का डिस्टेंस है और जो भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यदि आपने वो रख दिया, so that is image upon object distance, ये रहा image upon object distance। what is edge dash, edge dash का मतलब होता है height of the image, edge का मतलब होता है height of the object। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, U का मतलब है ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, पोल से, दैट इज नोन एज U। V का मतलब इमेज कहां बन रही है, पोल से, V। H क्या है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है, 20 सेंटीमीटर का है। H, व्हाट इज एच डैश, जो इमेज बन रही है उसकी हाइट क्या है, दैट इज एच डैश। सो व्हाट इज मैग्निफिकेशन, M इज इक्वल्स टू, यदि आपके पास में इमेज और हाइट का लेंथ है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, यदि आपके पास में डिस्टेंस है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो m शुड बी इक्वल्स टू h डैश अपॉन h, और इट इज आल्सो इक्वल्स टू माइनस v बाई u, माइनस v बाई u। ओके, ध्यान रखना गाइस, m की वैल्यू यदि 1 से बड़ी आ रही होती है, इफ m इज ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लीज रिमेंबर इसका मतलब है ऑब्जेक्ट्स मैग्नीफाई हो रहे हैं। बट इफ the height of the image, or sorry, the magnification of the image is less than 1, say 0.25, 0.4, 0.3, that means that उसकी इमेज क्या हो रही है, छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट से। So ये बस इतना सा ध्यान रखना। So we would stop it right over here. So let's summarize this.
Convex mirrors के दो uses, they can be used for rear view mirrors, also they can be used for street lamps diversification. Second is, there are only two cases for convex mirrors. First is at infinity, the image will be at the focus but it will be behind the mirror. It is virtual and erect, highly diminished and point size. On the other hand, any other position where you have kept the object, be it at infinity के बाद में आपने कहीं पर भी लिया, center of curvature पे, center of curvature and focus के बीच में कहीं पर भी, the image is always going to be in between pole and focus, but on the right hand side of the mirror it is always erect and virtual. Okay, now, and of course it is diminished. Then the ray diagrams you need to see it from the book, guys, very important ray diagrams. Then मैंने आपको बताया microscope and telescope are two devices. Microscope is used to see smaller objects into the larger sizes, while telescope is used to see farther objects to closer ones. Then we had talked about the word mirror formula. So mirror formula is nothing else but is equals to 1 upon f, which is equals to 1 upon u plus 1 upon v, where f means the focal length from the pole, u means the object distance from the pole, and v means image distance from the pole. And you need to use the sign convention. 0 के ऊपर मतलब पोल के ऊपर पॉजिटिव, पोल के नीचे नेगेटिव, पोल के लेफ्ट में नेगेटिव, पोल के राइट में पॉजिटिव. दैट्स ऑल. Then comes the word magnification. Magnification का फॉर्मूला होता है m should be equals to h dash by h. It is also equals to minus v upon u. So that is the formula of magnification. So that's all from my side, guys. Tomorrow we'll be completing this chapter. We are going to see a few more phenomena, which is known as twinkling of the lights, advanced sunrise, and the delayed sunsets. We are also going to see why the sky appears blue in color, why do stars twinkle, why this particular rainbow, mirages, and we are also going to talk about the word lenses. I doubt कि कल chapter खत्म हो पाएगा, but we'll try and complete that, guys. Okay, guys, thank you so much. You have been, all of you, just a personal pep talk for around 1 minute or 2 minutes. Now, I'm not saying that whosoever is seeing the video is doing fantastic thing, though it actually requires effort. Because आपकी जगह पर यदि मैं खुद अपना ही वीडियो देख रहा हूँगा, trust me, मैं सो जाऊँगा. I would sleep. But I really appreciate, by the way, all of you guys who are continuously doing this work, and that too with all those negativities around. That the lockdown is over there, and there is this these particular kind of news is मर रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. Parents अपने अलग टेंशन में, because maybe their business is not running that smoothly, maybe their salaries are being deducted, and so on and so forth. There are a lot of things, but still you guys have been pretty active on the group. You guys are continuously sending sheets, sending papers, irrespective of that I personally am unable to check all those particular sheets. Still there is 2 weeks of backlog now. Last week का भी टेस्ट का बैकलॉग बचा हुआ है मेरे पास में, this particular weeks also. But still you guys, आप लोगों का enthu hats off है. You guys are just continuously doing, you are participating actively in the sheets, you are posting pictures, you are doing this, you are asking doubts. Guys, fantastic, hats off. In fact, my work is comparatively much more simpler to only teach, just come over here and do this. But to be very honest with you, it's not that easy, because post making this video, believe me, because I am not a very mobile phone gadgety guy. I personally don't like to make so many videos. I've never been on any kind of social media. I'm not on Facebook, not on Insta, not on Twitter, not on anything at all. Means I personally do not interact with anybody at all. And this is the first time we are doing this. But believe me, the kind of response you guys are giving is just keeping me, motivated on the feed continuously to come every single day and then make these kind of videos, which might be sounding a bit more mediocre, but you guys know that's what not the class is all about. But this is just a temporary glitch which is happening, so I'm sure this is going to be fixed very soon. We all guys are going to meet and have a lot of fun, because आप लोगों ने already 5 chapters तो करके बैठे हुए हो in maths and science के अंदर, and that too in a month, and that too in a lockdown month, guys. Amazing. आप बोलोगे नहीं सर हमारे स्कूल में सभी लोगों ने कर लिया है. I don't know about your school, guys. I don't know about the preparation of your other students, but मैं अपने students को जानता हूँ जो लोग continuously sheet भेज रहे हैं, कर रहे हैं. You guys are rock stars. Might be आपके friends भी होंगे who might also be rock stars, but I think you guys deserve a complete hats off.
So it's a fantastic performance from all of you. I'm sure this lockdown is going to get over soon, guys. Please do not lower down your tempo or rhythm. Please करते रहो एंड ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन आपको इसके रिजल्ट्स पक्का मिलेंगे. एंड इट्स नॉट एक ना एक दिन, गाइस बोर्ड के एग्जाम्स तो होंगे ही होंगे, बीट कोविड प्रेजेंट और एब्सेंट, वैक्सीन ओवर देयर और नॉट ओवर देयर, बट एग्जाम्स तो होंगे 10th के, बिकॉज इट्स अ वेरी फंडामेंटल काइंड ऑफ अ क्लास, so they can't skip your exams ideally. So still just maintain the rhythm and keep on doing what you guys are doing. Okay, enjoy guys, play a lot, do some physical exercises, help your mom. And guys just a last thing, हम लोगों ने काफ़ी पढ़ाई करी इस एक महीने या 1.5 महीने के ड्यूरेशन में. I think I started making videos for around 13th and 14th of the last month, and it's been now almost around 1 month and 14-15 days. I've been teaching you all of this thing. Just as some personal request, guys, please, if at all possible, mom and dad, your mom and dad, guys, they only require your good mornings and smiles and good evenings, and because of this they are just carrying on with their lives. You don't know what all sacrifices they have made only for you. So my sincere request would be to guys, please, go bow to them. If you can't bow to them, please touch their feet. If you can't touch their feet, if you feel it's very uncool, guys, at least hug them. If you feel even hugging them is not, it's very uncool, guys, please say them good morning and at least good night once you're done with this. And to be very honest, guys, I'm not saying all this lecture because I really want you to guys pretty close with your parents or all this and all that uncool wala stuff. I firmly believe, being a science student, from the bottom of my heart, that if you guys actually do this, the positive aura, the positive energy which actually your mom and dad radiates once you say good morning, good evening with a nice smile, if you're going to touch their feet, the blessings means a lot. It's not what the Gautam sir is teaching you or what our class is going to teach you is going to make you on the top. It's their blessings which is ultimately going to help you out. So guys, please do that. Okay, it's going to make somebody's day very, very nice. Yeah, they're going to smile. Okay, and then you can play all the way PUBG and Subway Surfer and God knows which all games are you guys playing. Do comment. Thank you guys so much. Lovely day. Bye bye. See ya.